I am delighted to introduce our next panel discussion titled Policy Framework for Export Promotion, Fostering Economic Growth Through Incentives and Strategies. To moderate this session, I would like to invite on stage a renowned name in journalism, Mr. Syed Talat Hussain. Known for his sharp analysis and profound insight into Pakistani politics and current affairs. Mr. Hussain brings decades of experience from both print and television journalism. His fearless approach to addressing critical issues and his commitment to journalistic integrity have made him a respected voice and a trusted source of a balanced commentary. Ladies and gentlemen, please put your hands together for Mr. Syed Talat Hussain. Assalamu alaikum ji, ladies and gentlemen, glad to be moderating this very important session. May I request all the panelists of my session to kindly come to the stage because we are kind of short on time. Nadeem Saab, Rafi Saab, Ali Salman, please, come. All of us need to be here on the stage. Okay, let's start the session. We'll be radical about this session in terms of time management. And also the fact that we have such distinguished speakers here who would like to reflect on the ideas that they have with them. So I'll, without wasting any more moments, I'll ask Dr. Nadeem to start the proceedings, and each panelist will do the self-introduction, and then they'll speak for like sort of 2.5 to 3 minutes. I'll manage the time, and then we'll have a debate around whatever they have to say. So Dr. Nadeem, over to you. Thank you, Ji. Thank you, Talat Saab. It's an honor to be here. Chambers President Talat Saab Aap and the wonderful panel. Let me quickly say, Ji, my name is Nadeemul Haq. I've been around. I'm now with PIDE, P-I-D, Pakistan Institute of Development Economics. Everybody has heard this conversation today. Lovely presentations, Raza bhi aaya, and we had the Chambers President also talking about the figures. So you got all the figures. Pakistan has a deep issue. Our blood pressure is way high. Our pulse is weak. The economy is very sick. We are dying. So I won't go into the numbers. I won't say anything. I just want to make 3 points, Talat Saab. We have a deep cancer, and that cancer has to be cured, otherwise we'll go nowhere. This business of asking for subsidies and this business for the government doing this to Azad Kashmir and to this and to that, this business the government has to end. They have to show some leadership. Unfortunately, they don't. So I point to 3 problems that we have. One is culture. We don't have a culture of modernity. The mullah rules this place, dunya sakin hai, suraj uske ird-gird ghumta hai, speed of sound is higher than the speed of light. Ye to hamara vision hai sara. Auratein ghar bithaएं, this is what we have. But iske saath we've got a deeply politicized vision. Every evening we see on TV these 3 mad people yelling at each other over nothing. Uske saath hum dekhte hain, subah akhbar mein aa jata hai, Dubai mein properties hai, ye wo. Chalo yaar, theek hai, so what? किसकी नहीं होती प्रॉपर्टीज? अगर नहीं है तो अफसोस की बात है. आप ये बताएं कि आपकी बिजनेसेस क्या है, वो नहीं. डिसिप्लिन, वी हैव नो डिसिप्लिन. नोबडी वर्क्स ऑन टाइम, नोबडी डज एनीथिंग. वी हैव सेठ कंपनीज, वी हैव नो प्रोफेशनलाइज्ड कंपनीज. ये हमारा कल्चर है. सो आवर कल्चर इज नॉट मॉडर्न. सेकंड पॉइंट, वी हैव नो विजन. आई डोंट नो वेदर वी आर सोशलिस्ट कंट्री तलत साहब और वी कैपिटलिस्ट कंट्री. प्राइसेस फिक्स कर रहे हैं, सस्ती रोटी बांट रहे हैं, ये कर रहे हैं, तो सोशलिज्म की तरफ चले, वो भी नहीं करते. तो वी डोंट इवन नो वेदर ये सोशलिस्ट और कैपिटलिस्ट कंट्री क्या है, मुझे समझ नहीं आ रही. इसी के साथ जो हमारी एक और विजन में छोटी चीज़ है, हम बड़े छोटी सोच वाले लोग हैं, बहुत छोटी सोच वाले लोग हैं. हमारी सबसे बड़ी कंपनी OGDC है, $2 billion. टाटा इज $360 billion. Reliance is $250 billion. So these pygmy companies, these stunted companies are not going to export. They're going to take us nowhere. I'm sorry I'm being a little provocative, but that's what the session should be about. When will we have companies that are grown up and big boys playing in the big boy world? ये असल बात है, हमें पूछना चाहिए क्यों? Why do we have small thinking people? हमने इस पे बहुत बड़ा सर्वे किया है. हमारे बच्चे भी छोटी सोच के हैं. ग्रेड 17 की नौकरी मिल जाए बस ठीक है. So we are a small thinking people. We are not a big thinking people कि हमने दुनिया में कुछ करना है. Number 3, हमारी हुकूमत जो अभी तक कॉलोनियल हुकूमत है. कॉलोनियल हुकूमत में सिखाया गया था कि कंपनीज को ना ग्रो करने दो, काम ही ना करने दो. वही बाबू हैं, वही जजेस हैं, वही प्लॉट्स हैं, वही घर हैं, वही गाड़ियाँ हैं, वही प्रोटोकॉल है. इसमें आपने क्या करना है? मॉडर्निटी का तो कोई ताल्लुक ही नहीं इससे. ठीक है जी. और आपकी जो कोई मुल्क में मार्केट ही कोई नहीं, ब्यूरोक्रेट कोई मार्केट बनने नहीं देता, और हर जगह वो ऑफिशियल अपनी NOC और वो परमिशन इकोनॉमी है, परमिशनिस्तान इसको हम कहते हैं. हमारे पास एक टी-शर्ट भी है, चाहे तो यहाँ ला के बेच देंगे, उसके ऊपर लिखा है परमिशनिस्तान. हम परमिशनिस्तान में रहते हैं. इसके साथ साथ एक और चीज़ है,
कॉलोनियल हुकूमत है तो हमें अपनी पॉलिसी बनानी नहीं आती, सारी पॉलिसी गोरा बनाता है, हम बनाते ही नहीं। पहली चीज़ है समझ ले, सारी पॉलिसी गोरा बनाता है। मैकिन्जी को भी हायर किया SIFC ने, मैकिन्जी आपकी पॉलिसी बनाएगा। स्टेफन डर्कन आपकी अखबारों में था, अभी आ रहा है। स्टेफन डर्कन तलत साहब के भी इंटरव्यू भी नहीं करेंगे, इंटरव्यू आप लोगों को ही करेंगे। तो गोरा पॉलिसी बना रहा है, उसको तो इंटरव्यू कर ले तलत साहब। तो ये 3 हमारी प्रॉब्लम है सारी। हमें क्यों बुलाते हैं? गोरे को बुलाए, यहाँ बिठाएं, वो आके बताए आपको क्या हो रहा है। आपको बुलाना था IMF वर्ल्ड बैंक के हेड को, उनको कहना था बताएं, क्योंकि हुकूमत तो वो चलाते हैं, हमारे प्राइम मिनिस्टर उनके आ रहे हैं। थैंक यू जी। Would not be Dr. Nadeem if he didn't say all these things. So thank you very much for being so provocative, and we need to really think out of the box. And I absolutely take your point of the culture being the driver of this lethargy and this crisis that we have. You go ahead, Ji. You're next. Ji, Bismillahirrahmanirrahim. My name is Ali Salman, and I'm Executive Director of Prime, which is an independent think tank. So, Talat Sahab, you were talking about out of box, and I will go in the box. Okay. And the box today is the export policy framework, because we are part of the export dialogue. And I congratulate Rawalpindi Chamber of Commerce for continued leadership, for bringing business community every year together for last, I think, about 15 years or so. So first of all, I like to say that I think unless we realize the gravity of the problem, we're not going to find the right solution. So हम बहुत बात करते हैं कि जी एक्सपोर्ट्स उतनी नहीं बढ़ रही हैं, बहुत मार्जिनली बढ़ रही हैं जितना हमें चाहिए, लेकिन एक इम्पॉर्टेंट जो फैक्ट है वो ये है कि हमारी एक्सपोर्ट सब्सटैंशली ओवर द टाइम डिक्लाइन हुई हैं. If you look at exports in terms of GDP, it used to be 16 or 17% in 1999, and over 25 years it has declined to 9 to 10%. So our real exports have declined by almost 40%. So let this reality be sink in for a second. Second thing is that it's not that हम कुछ नहीं कर रहे. It's not that the government ने कोई policy instruments नहीं लेके आए हैं या government is sitting doing nothing. So I was just reviewing the number of exports facilitation schemes which we have in this country. There are almost 9 or 10 different kind of schemes. Export finance scheme, DTRE, manufacturing bond scheme, export development fund, export zones बने हुए हैं मुख्तलिफ पूरे country के अंदर. So सब हमने करके देख लिया, और इसके अलावा हमने GSP plus भी लिया. लेकिन चूंकि हमारी एक्सपोर्ट्स रियल टाइम में डिक्लाइन हुई हैं ऑलमोस्ट बाय 40% लास्ट 25 years, एक कंक्लूजन बहुत क्लियर है कि वट एवर पॉलिसी फ्रेमवर्क वी इंट्रोड्यूस्ड हैज फेल्ड. Okay. So if the policy framework for exports have failed, what we need to do, and those are 3 or 4 different, 3 or 4 important messages on which I will conclude. और ये वो काम है जो हम नहीं कर रहे हैं, एज अपोज टू जो हम काम हमने किए हैं. आपको मैंने बताया मुख्तलिफ स्कीम्स हमने इंट्रोड्यूस किए हैं इनका, लेकिन उनकी जो यूटिलाइजेशन है लेस देन 10% है. सो बिजनेस कम्युनिटी भी उसको बेनिफिट नहीं कर रही. इन पाकिस्तान, अकॉर्डिंग टू पाकिस्तान सिंगल विंडो, देयर अबाउट 17,000 एक्सपोर्टिंग फर्म्स, 17,000 जो कि उसके साथ रजिस्टर्ड हैं. उसमें से सिर्फ 854 फर्म्स ऐसी हैं जो कि किसी न किसी स्कीम से बेनिफिट करती हैं. So certainly, these schemes, these incentives are not working. So what needs to happen? First of all, we need to come out with this fixation of forex exchange rate. From 2013 to 2018, we paid heavily by fixing of exchange rate. So while the dollars were coming from China, CPAC, we were significantly declining in exports. Second, restriction of imports. That was a bad idea, and that remains a bad idea. In 2022, a combination of exchange rate restriction and import restrictions, while it translated into about $10 billion of current account saving, so hats off to Miftah Ismail Saab, but this was neutralized by an equivalent amount of reduction in exports and remittance. So net gain was 0, and actually economic growth significantly declined as a result of it. So what we need to do is we need to join the global value chain.
ये जो हम मेड इन पाकिस्तान की जो बात करते हैं, मुख्तलिफ बिजनेस एसोसिएशंस भी बात करती है, पाकिस्तान बिजनेस काउंसिल भी बात करती है, वी नीड टू कम आउट ऑफ दिस मंत्रा, मेड इन पाकिस्तान. देयर इज नो कंट्री इन द वर्ल्ड which makes product exclusively. We are part of a global village. We need to be a part of global value chain. We need to, and what we need to do, we need to reduce import taxation. Dr. Manzoor has already talked about it, so I'm not going to repeat that. Pakistan is #1 country in the world in terms of import taxation. Almost 46% of our revenue on taxation comes from import. It needs to brought down to 5 to 10%. Only 30 seconds to close. Right. So remember please, all the taxation on import is a taxation on exports. So this needs to drastically change, which we are not changing. And lastly, I think all these schemes, while they are being introduced, there's a cost to these schemes, but we need to seriously examine all these schemes and incentives to see if they are working or if they are restricting actually in the exports. This needs more research, but I thought I'll just stop here and move forward discussion. Thank you very much. Over to you, Raza sir. थैंक यू तलत साहब. क्योंकि मुझे 3 मिनट का टाइम आपने दिया था, मैं कोशिश करूँगा 3 मिनट के अंदर जो IT सेक्टर का केस है मैं इधर प्रेजेंट कर सकूँ इन टर्म्स ऑफ एक्सपोर्ट्स. मेरा फ्लाइट है का छोटा सा, सिर्फ 1 मिनट में मैं सिर्फ एक्सप्लेन करूँगा माइंडसेट. आई एम रजा सुखेरा, आई एम चीफ इंडस्ट्री डेवलपमेंट ऑफिसर फॉर पाकिस्तान सॉफ्टवेयर एक्सपोर्ट बोर्ड. मिनिस्ट्री ऑफ IT एंड टेलीकॉम के साथ मैं 2013 से एसोसिएटेड. नेक्स्ट कीजिएगा अगली स्लाइड. क्योंकि सुबह से सब बात कर रहे हैं, आई जस्ट मेट रजा बाकर साहब ऑन द स्टेयर्स कि आपका आर्टिकल मैंने फ्लैश करना था. ये आर्टिकल उन्होंने लिखा था जुलाई या अगस्त में ऑन IT सेक्टर के व्हाई डू IT सेक्टर नीड अ रोशन डिजिटल अकाउंट. और जुलाई अगस्त में आफ्टर लिविंग द ऑफिस, जब उनका ऑफिस टेन्योर ख़त्म हुआ है 2 महीने के बाद उनका ये आर्टिकल आया था. उन्होंने केस बिल्डअप किया था कि IT सेक्टर को रोशन डिजिटल अकाउंट क्यों चाहिए. सेकेंड लास्ट स्लाइड पर अगर आप चले जाएँ तो ये कुछ नैरेटिव पीछे जाइएगा, थर्ड एक और पीछे, बस इधर. ये जो सेकंड पैराग्राफ है ना, इस पे उन्होंने केस बिल्टअप किया है कि द वन थिंग IT कंपनीज एंड फ्रीलांसर्स नीड इज़ रिपैट्रिएशन. रिपैट्रिएशन क्यों चाहिए? 86% ट्रेड सरप्लस सेक्टर जो सिर्फ 14% इम्पोर्ट इनपुट कॉस्ट के साथ आपको 86% ट्रेड सरप्लस डॉलर्स लेके दे रहा है. ये उनके डॉलर्स हैं. They are keeping it either in Dubai accounts or in Western accounts जहाँ उनके clients हैं, and rest of the money they are bringing here. एक चीज़. दूसरी चीज़, बस ये स्लाइड ही रखिएगा, अगली स्लाइड कीजिएगा. ये 2 स्लाइड्स हैं जो प्राइम मिनिस्टर हाउस में अप्रैल 2022 में मार्च 2022 में हमने फ्लैश की, और एग्जैक्टली रजा बाकर साहब ऑफ द गवर्नर देयर. बात करने का मकसद, ये कंपैरिजन इधर जो मकसद था वो ये था कि eventually the policy mindset, the thought process is very much different when someone is in the office and when you are not in the office. अब वो क्या चीज़ें हैं जो आपको वो चीज़ें सेक्टर ग्रोथ के हवाले से, एक्सपोर्ट्स के हवाले से आपको रोकती हैं देखने से आउट ऑफ द ऑफिस. while you are sitting in the office you are not able to understand कि 86% ट्रेड सरप्लस सेक्टर को आपको खोलना है. You need to understand one thing. It's an opportunity to talk to the sectoral diverse audience जो हर किस्म के सेक्टर से बैठे हुए हैं. तो परसों तलत साहब जब हम बात कर रहे थे FBR से, PPRA से, स्टेट बैंक से, एक ही दिन में हमने 3 सेशन किए, प्राइम मिनिस्टर ऑफिस ने हमारे लिए अरेंज कराएं. एंड दिस आर द वेरी इंपॉर्टेंट डेज टू बी इन इस्लामाबाद एंड ऑन कॉन्स्टिट्यूशन एवेन्यू. हर सेक्टर से बजटरी रिकमेंडेशंस आ रही हैं क्योंकि आगे कंपाइल हो रही हैं. तो हर किसी ने ये बात की, अब IT सेक्टर ही मांगेगा तो बाकी सेक्टर भी हमारे पास आ जाएंगे. So someone flashed the priority sectors. तो टेक्सटाइल के बाद दूसरे नंबर पे IT सेक्टर है. मेरी एक दरख्वास्त बाकी सेक्टर से है, डॉक्टर साहब भी बैठे हैं. इट्स ऑलवेज प्लेजर टू टॉक टू डॉक्टर खुरम एंड द वे विद द विजडम ऑफ द टेक्सटाइल सेक्टर व्हेनेवर ही लुक इनटू द स्टार्टअप इकोसिस्टम, IT इकोसिस्टम, तो बहुत कुछ उनसे सीखने को मिलता है. लेकिन सबसे ये दरख्वास्त है कि IT सेक्टर एक वो सेक्टर है जिसके पास सोल्यूशन है आपके करंट अकाउंट डेफिसिट का. आप 18 महीने पे, 24 महीने पे, 36 महीने में जब से साइकिल दोबारा आता है ना, तो दिस इज द वन सेक्टर which can bring this country out of this current account deficit. I would just like to conclude it here by just referring कि इंडिया की अगर $200 billion प्लस एक्सपोर्ट्स और $125 अरब की सऊदी की ऑयल एक्सपोर्ट्स का कंपैरिजन आप करके देख लें, वी कैन अंडरस्टैंड कि हमारे प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन किधर है.
एक आखिरी एग्जांपल, इसी हॉल में हमने एक केस प्रिवेंट किया, सिटिंग प्राइम मिनिस्टर was in the hall, आर्मी चीफ was sitting there and we prevented that case. थर्ड ईयर सिटी में एक बच्चा है जो $120,000 के पेरोल टैक्स पे बैठ के एक आईटी कंपनी चला रहा है, उसका पेरोल टैक्स आउट ऑफ यूएस है, $120,000 एनुअल टैक्स फ्री, ठीक। और उस बच्चे को उन्होंने पैसे भेजे हैं कि रेनोवेशन करो दफ्तर की, इधर बच्चों को पढ़ो, भावलपुर, मुल्तान, लाहौर से बच्चे जाके उसके पास जॉब कर रहे हैं। वी प्रिवेंटेड दिस केस एंड ही इज ऑन अपवर्क, लिफ्टेड एज globally number one resource on API integration. This is the potential we are talking about. So let's think differently about this sector. This is my case. Thank you. Thank you very much, Raza. Our anecdotal brilliance is matchless, but the issue really is how to look at sort of mass production of exportable expertise and goods and services. But yeah, like we say कि हमारे पास क्रिकेट का बड़ा टैलेंट है, कितना तेज बॉलर है, 160 पे करता है and all that. But then when it competes at the sort of higher level where structures are involved, we tend to kind of fail. So Rafi sir, over to you. थैंक यू वेरी मच तलत साहब। मेरा नाम जी राफ़े ख़ान है, मैं सीनियर इकोनॉमिस्ट हूँ, वर्ल्ड बैंक में काम करता हूँ बेस्ड। So थोड़ा just turn the mic towards you sir. Yeah, go ahead. मेरा नाम जी राफ़े ख़ान है, मैं सीनियर इकोनॉमिस्ट हूँ, आई वर्क फॉर द वर्ल्ड बैंक, आई एम बेस्ड इन इस्लामाबाद and I work on areas at the intersection of financial and private sector development. Aaj, given the paucity of time, I'm only going to be talking about 3 quick things, and these things are things which have been mentioned over and over again over the last few hours or so. Point number 1 is on access to finance. Over the last 2-3 hours or so, हम लोगों ने over and over सुना है कि interest rate जो बहुत high है, जो finance है, it's too expensive. लेकिन I think that perhaps we need to take a step back and also focus a bit on the availability of finance in Pakistan. What we know for a fact is that credit to private sector as a percentage of GDP in Pakistan currently stands at 15%. This is a third of the South Asian average, and this number has gone down significantly over the last decade and a half or so. So आपको जो financial sector है जी पाकिस्तान में, it's not in the business of financing the private sector, it's in the business of financing the government of Pakistan. आपके जो treasury operations हैं वो lead करते हैं profitability and operations of commercial banks and also of the broader financial sector in the country. This naturally has consequences because आपके private sector के पास finance as a starting point available ही नहीं है to invest, to grow, to export. Over the last decade and a half or so, insofar as the exporting sector is concerned, State Bank ने काफ़ी हद तक इस issue को resolve किया था through the implementation of these export refinance schemes. उसमें हो ये रहा था जी कि स्टेट बैंक पैसे देता था कमर्शियल बैंक्स को और कमर्शियल बैंक्स आगे जो ओरिजिनेट करते थे एक्सपोर्ट फाइनेंसिंग। लेकिन as part of the ongoing IMF program, ये schemes अब gradually move हो रही हैं to the Exim Bank of Pakistan. Now the only problem there is that Exim Bank is a new organization. It's an organization which only became operational about 6 months back or so. So this is a space that we need to watch very carefully to make sure कि आपके exporters के पास financing available as a starting point, and then secondly we can have a discussion and a conversation on the affordability of finance. The second point is on trade policy. इसके ऊपर सलमान साहब ने भी बात की है, डॉक्टर मंजूर ने भी आज बात की है, and I'll be very quick. We do not need to reinvent the wheel. What we know for a fact about Pakistan's tariff policy is कि आपके average tariffs जो हैं in Pakistan are significantly higher than Pakistan's regional comparators, structural comparators, and aspirational comparators. उससे जी होता ये है कि आपका जो average businessman है, आपका जो average business होता है, उसके पास कोई incentive नहीं होता export करने के लिए, वो बहुत ज़्यादा domestic oriented होते हैं. So there is this inherent anti-export bias in Pakistan's tariff policy, and this will only be reduced if average tariff, which includes regulatory duties, which includes additional customs duties, it comes down over time. So that's point number 2. Point number 3 is something which interestingly was not brought up in the conversation today. I've been listening to the conversation over the last 2-3 hours or so, but this is something that was not brought up surprisingly, and that's on the broader business regulatory environment in Pakistan. So again, what we know for a fact is that the regulatory environment in Pakistan, it's opaque, it's complex, it's archaic. If you want to register a business and operate a business in Pakistan, आपको approvals चाहिए होते हैं, NOCs चाहिए होते हैं, permits चाहिए होते हैं, licenses चाहिए होते हैं, dozens and dozens of different government departments से, which operate at different levels of the government, federal, provincial, local. This
is not something that's viable, especially when it comes to the exporting sector. अगर आप चाहते हैं कि आपका exporting sector competitive हो, अगर आप चाहते हैं कि आपका exporting sector जो है grow करे, then you need to significantly streamline the business regulatory environment in Pakistan, and this means streamlining the business regulatory environment across the entire life cycle of a firm. So starting from business registration to business operations to business exit. Now I do realize कि हुकूमत इस पे काम कर रही है, लेकिन it's very important कि इसके ऊपर काम जो है in a consolidated manner किया जाए in coordination with the different levels of the government. जी. So I'll stop here. Thank you so much. Thank you very much, Ji. I really appreciate the fact that we stuck to our 3 minutes time. I'll throw a couple of lead questions. Dr. Nadeem, I want to start with you. You spoke about this culture, and everything you said relates to culture. We don't think big. We don't work hard enough. We are used to subsidies. We really want to have shortcuts. So my lead question is, how do you change this culture? I know you're big on local level commerce. I remember you arguing very forcefully about Thelewala and Rediwala, and let sort of local commerce generate revenue and let people catch that spirit of entrepreneurship and making money for themselves. So, but how do you change this culture at the top? देखिए जी, पहली चीज़ जो है what we heard just now, कि an IT presentation was made to the Prime Minister and the Chief of Army Staff. I think that says it all. I don't see Elon Musk or Steve Jobs. In fact, Steve Jobs never came to DC. नहीं, आपको प्राइम मिनिस्टर पे एतराज़ है या चीफ आर्मी स्टाफ? मुझे सब पे एतराज़ है. उनको मीटिंग, ये दरबार का जो हमारा निज़ाम है ना, कि दरबार, आप जब रिपोर्ट करते हैं प्राइम मिनिस्टर ने मीटिंग की और मैं मीटिंगों में बैठा रहा हूँ, 100 बंदे मीटिंग बैठे, दैट्स नॉट अ मीटिंग. That's a bullshit job जहाँ के बंदे आके तकरीरें कर रहे हैं और जा रहे हैं. यार, I mean, let's be clear. Do we have a modern culture or not? A meeting with more than 5, 6 people, 10 people, meeting नहीं होती. Then meeting की preparation कोई नहीं. So एक तो वो चीज़ है. Number 2 ये चीज़ है, the culture has to change at the top. मैंने इमरान को भी कहा था, culture has to change at the top. For example, the cabinet meeting. You tell me how many cabinet meetings begin on time? How many end on time? How many cabinet meetings have adequate preparation? I have seen the paperwork for cabinet meetings. This is not paperwork that's worth having. How many white papers are issued? Not a single white paper is issued. How many policy papers are issued? And how many policy papers are written by us, not by the World Bank or Stefan Durkin or so-and-so, OPM or ASI? We have to really take control of our economy and recognize, are we an economy or not yet? Are we even an independent country? I contend we are not an independent country. और हमारा कल्चर जो है, कल्चर हम चेंज ही नहीं करना चाहते. So what do we do? Culture has to begin with us changing. For example, even the chambers बैठे हुए, मैं इनको सबको कहता हूँ भाई हमारे साथ आके कॉन्फ्रेंस को बात करो. ये कहते नहीं हम कर सकते, because they will only talk to the government. अभी बजट आ रहा है, कह रहे हैं गवर्नमेंट से हम बात करेंगे, प्रपोजल देंगे. मैं तो कहता हूँ गवर्नमेंट should collect no proposals. Government is not a place for giving proposals for taxes. They should make their own budget the best way they can through research and thought, which we are not willing to do. Research and thought तो हमारा आता ही कहीं नहीं, तो क्या करें हम? Okay. So Ali, you spoke about import liberalization, and forgive the sort of layman's understanding of the whole issue. We looked at the slide. I think Raja Amir put that slide up where the imports were double our exports as we speak. And I'm just wondering, more import liberalization is going to cut into the already dollar deficit that we have. And what do we import? I mean, we can't control consumer items coming in. We are a heavy consumer society. We don't really promote culture of research and development. There's no import substitution. There's no technology transfer. So what sort of imports are we talking about? And how will they help the economy? So I think Talat साहब, सबसे पहले तो हमें acknowledge करने की ज़रूरत है कि substantial percentage of our imports is actually non-luxury in nature. Almost 90% of what we import is essential, which means that either it is being used by the industry as inputs, raw materials, production, or direct consumption. It's not luxury in the sense that we all understand. Secondly, जो आपने word इस्तेमाल किया ना, import substitution का, and I'm glad that you use this word because this import substitution is one catch-all phrase which is part of the problem.
the countries have developed not by substituting imports, countries have developed by becoming part of global value chain. And that is something which we are refusing to do, and our policies are actually making sure that we continue this way. I would like to acknowledge कि कुछ developments हुई हैं, national tariff policy 2019 में जो आई, that was a good step forward. लेकिन by and large हमारी जो mindset है, जिसका भी डॉक्टर नदीम भी बात कर रहे थे, जो culture है वो अभी भी protectionism की तरफ है. We are considered one of the most protective economies in the world by the World Bank or other. So अभी भी हम उसके अंदर है, so हमें वो open करना पड़ेगा. दूसरी बात जो आपने import और export deficit की बात, एक इंटरेस्टिंग बात यह है कि 1990s में जब हमने लिबरलाइजेशन और रिफॉर्म शुरू किया, तो दैट वाज द ओनली टाइम व्हेन एक्चुअली वी अचीव्ड ट्रेड सरप्लस. सो एंड द ट्रेड डेफिसिट वाज एक्चुअली नैरोड डाउन एज अ रिजल्ट ऑफ लिबरलाइजेशन, नॉट एक्सपैंडेड. ना उसके बाद 2003-4 के बाद दोबारा हमने वो उसको रिवर्स जनरेट किया और फिर हमने उससे बाहर नहीं आ सके. तो इसकी वजह से हमारा जो एक्सपोर्ट जो इंपोर्ट डेफिसिट है वो कम नहीं हो सका. सो एक्चुअली वी नीड टू लिबरलाइज मोर, नॉट लेस, एंड ओनली दैट वुड एक्चुअली प्रोपेल द इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन, द ग्रोथ, इंटीग्रेशन, एंड इट विल इवेंचुअली हेल्प द एक्सपोर्ट्स. थोड़ी सी बात कर दूं जी, क्वाइट फ्रैंकली जी, आई थिंक 2-3 मिथ्स बहुत बड़ी हैं पाकिस्तान में. एक तो वी आर अ कंजम्पशन बेस्ड इकोनॉमी. ओ भाई, कौन सी इकोनॉमी नॉन कंजम्पशन बेस्ड होती है? एवरी इकोनॉमी इज कंजम्पशन बेस्ड. तो ये हम चीज़ें जो कॉमन पार्लेंस में तला साहब, इस पर आपके मीडिया का बहुत कसूर है, क्योंकि ऐसी ऐसी बातें करते हैं मीडिया पे. एक कि हमारा टैक्स GDP रेशो बहुत लो है, हम लिख लिख के तंग आ गए. एक तो देयर इज नो सच थिंग एज अ कंजम्पशन बेस्ड इकोनॉमी. हमें आप इन्वेस्ट करने नहीं देते, काम तो कोई करने नहीं देते. कोई काम करो, FBR पीछे, ये वो पॉलिसी मेकर्स शायद साहब बैठे हुए हैं, फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर. वो खुदा के वास्ते पॉलिसी मेकर एक जगह तो बैठे ना, सुबह उठ के सस्ती रोटी, शाम को ये फलाना वो. हमें चाहिए कैबिनेट जो कोई काम ना करे, बस चुप करके बैठे साइड पे, चले जाए बाहर सैर करें, काम ना करें, इकोनॉमिक्स में खास तौर पे कोई हाथ ना मारे. नंबर 2, खुदा के वास्ते वी नीड एन ओपन कम्पिटिटिव एनवायरनमेंट. क्रिकेट की तरह इकोनॉमी होती है, रूल्स बनाएं, इनको खेलने दें, जी सकते हैं जिए, बाबर आजम बन सकते हैं, बने नहीं तो बैठ जाए चुप करके. सब्सिडी का निजाम खत्म करें, इनको ओपन कम्पिटिटिव एनवायरनमेंट में खेलने दें जैसे क्रिकेट खेलते हैं. If I may just really quickly on this point on imports and liberalization of tariffs, I think, as a starting point, आपको overnight हर चीज़ को liberalize करने की, आपको overnight हर चीज़ को liberalize करने की ज़रूरत नहीं. You can take a gradual approach. And what you can do is you can start with intermediate goods, you can start with capital equipment. वो चीज़ें जो आपके exporters को चाहिए, आपकी industry को चाहिए अपने goods को बनाने के लिए और competitive होने के लिए. तो the suggestion or the idea is not to do it overnight and not to do it across the board, but do it in a structured manner and do it right now, especially in instances where intermediates are required by exporters or where capital equipment is required by exporters. So you're not suggesting, one time and one big hit import liberalization. You're saying it has to be more collaborated, has to be monitored. You have to see what's coming in, and as long as it feeds the industry, it's fine. Is that what you're suggesting? Gradual. Gradual. Gradual That would approaching. gradual be. Dr. सर बड़ा प्रॉब्लम है ग्रेजुअल में. प्रॉब्लम ये है, यू लीविंग इट टू द बाबू टू डिसाइड. क्वाइट फ्रैंकली वी नीड अ क्रिकेट फील्ड. ये तो ग्रेजुअल ये बात है कि बाबर आजम कहे यार मैं परमिशन लेके खेलूंगा, फिर मैं कहूँगा मैं परमिशन लेके खेलूंगा. नहीं जी, वी नीड ओपन कम्पिटिटिव फील्ड. आप आए, खेल सकते हैं खेलें, नहीं खेल सकते घर जाए. वो भी काकूल अकेडमी से अब ट्रेन होके आते हैं सर. अब क्या बात कर रहे हैं. Raza, you were very hopeful in terms of IT exports, and I was just looking at this appalling figure of 65 billion rupees being allocated to Higher Education Commission, and there are about 60 universities in Pakistan that are without VCs as we speak. 28 of them happen to be in Punjab. 80% of the universities in KP don't have VCs. So given our state of research and our R&D problems, is this a realistic hope to have that we will somehow have exportable IT material? Right. So on that note, the major time of my day is spent with either with the chairman executive team or working on the skill side.
Let me put up a couple of figures with you. The HEC is saying we are having affiliated, non-affiliated universities, college. We are having like 75,000 IT graduates annually. Industry is saying those are 10% are employable. This is what, industry's perspective. We conducted a centralized IT test to evaluate like 150 universities on 9 different skill sets, and there were like 10,000 students who voluntarily appeared on those tests. And we tried to identify the factors which is a hurdle for that quality of graduates being produced. We have identified the factors and we are working on that side. Again, what I am doing, I am also a project director of a 1 billion rupee project, and I am hiring team and I am making them sit in Chairman HEC's office. So what I have told Dr. Mukhtar that for the last 36 months, whatever I worked with the IT industry by understanding their immediate need and their upcoming need, we want to have that institutional memory to be transferred with your office. It has to lead the activities, and it's there, its future. It will be, number one priority for universities as well. Interestingly, now universities are also understanding, okay, the change is on way. IT has to be number one demand in terms of admissions as well, and we have to opt whatever industry is saying. So we are somewhere near to settle with those energies and that industry-academia gap. But by introducing these interventions, we want them to be sustainable, not to be gone through, invested through the public money. The one important factor about the sector is, immediately to take it from $3 billion industry to $10 billion reported remittances industry. We do understand there are two immediate needs we have to prioritize, and we are trying to prioritize. One, the right skill set through HSS vertical, and secondly, infrastructure. So if you have to add 200,000 IT graduates to support this export growth of IT sector, you need 70 square per resource land as well. So around 42 million square of space, co-working space, we also need along with that. Interestingly, both of these verticals are not cost-based. Let me reiterate this point, especially to the other sectors sitting here. These are ROI-based verticals. If you invest on these two verticals, you will get a very good money against that. Everyone coming from different sectors coming to us, IT mein paisa hai, tell us how we can invest. I am just directing them and just requesting them to sit with us to explore these two avenues. आप skilled resource आज आप ट्रेन करने के लिए कैपेसिटी इधर जनरेट करें इंटरनेशनल इन्वेस्टर के साथ, और जो कोवर्किंग स्पेस है आपने एक्सपैंड करनी है इस मुल्क में 40 से 42 मिलियन स्क्वायर फीट की इमीडिएट ज़रूरत है. This is where your money, rather than going towards those. This is the one thing which I shared with DHA fellows as well, because we had a MOU signed with them and they are doing very good work to Vista vertical. And I said, see, ये जो फाइल का और प्लॉट का कल्चर था ना, ये somehow came from your side. अगर आप लोग IT में इन्वेस्ट करना शुरू करेंगे, everyone will look towards you guys to understand के what is the right ROI against our money. तो बजाय इसके उन कमर्शियल प्लॉट्स के और खाली जगह पे और अनऑक्युपाइड जगह पे आप खर्च करें, आप फोकस्ड खर्च करें. स्किल्स के पर्सपेक्टिव में स्पेशली वी आर फोकसिंग कि रीजनल नीड्स क्या हैं, व्हाट इज़ द इमीडिएट नीड कमिंग आउट ऑफ रियाद, व्हाट इज़ द इमीडिएट नीड कमिंग आउट ऑफ टोक्यो. 8 लाख बच्चे 2030 तक, they are giving globally #1 passport to the kid as well. What else you need? So we are trying to understand the global needs, regional needs, and how we can place our 75,000 graduates there. Sorry, मैं quickly, sorry for intervening again. देखिए, ये हम लोग बड़ी सोचते हैं कि कोई, मैं सुन चुका हूँ टेक्सटाइल का पहले था, फिर जराबों का था, फिर फलाना, अब IT भी. हम फैड्स फॉलो करते हैं. I'm sorry, I don't think IT is a future at all. हमारी यूनिवर्सिटीज़ पे हमने बहुत रिसर्च किया, काम किया. यूनिवर्सिटीज़ आर नॉट अप टू द वर्ल्ड क्वालिटी. They will never catch up. Systems Limited का जो हेड है एजाज, मैं उससे रोज़ बात करता हूँ, वो कहता सवाल ही नहीं पैदा, हमारे पास IT का स्किल ही नहीं है. एक चीज़ सोचिए, जब आपकी हुकूमत में IT नहीं है, बैठे हो आपके सामने फॉर्म प्राइवेट, कौन फीते वाली फाइलें अभी तक चल रही हैं, फीते वाली फाइलें अभी तक चल रही हैं, जूम नहीं चलता, मीटिंगों पे प्राइम मिनिस्टर के साथ बैठे हुए हैं, आप इंतजार करें 2-2, 3-3 घंटे. खुदा के वास्ते IT इज़ नॉट मेन स्ट्रीम्ड इन आवर कंट्री. आप देख लें, रास्त की बात करें, रजा पता नहीं है कि नहीं चला गया, मेरा ख्याल रास्त कहाँ चलता है मुझे बताएं.
So quite frankly, we need to mainstream IT in our business, in our community, in our society, in our government. If we don't do that, तो ये सोचना कि IT export कर लेंगे, the same जैसे हम कर रहे थे textile कर लेंगे, जुराबें बेच लेंगे. I'm just trying to understand, Dr. Saab, you keep on going back to the government and the cabinet, but you seem to set no store by the ability of the private sector to be its own captain. So why do you have to look towards the prime ministers and the cabinet meetings to change the culture? Point one. Bilkul. And why do you have to look towards the government system becoming IT based for IT industry to flourish? Because हमने calculate किया है जी 70% of the economy is directly under the control of the government. Government controls everything from the prices that you've seen of roti to atta to the wheat to this, that, etc. The government is behind everything. It is not willing to scale itself back. For example, आटे का निज़ाम मेरे बुजुर्ग लिख रहे थे 1950s में कि आटे का निज़ाम मार्केट पे छोड़ दो, नहीं छोड़ते. चीनी का निज़ाम मार्केट पे छोड़ दो, नहीं छोड़ते. रियल एस्टेट का निज़ाम मार्केट पे छोड़ दो, नहीं छोड़ते. मैं तभी तो कह रहा हूँ, we are a socialist country, we are not a private sector country. Just in private sector country होगी उसमें business को मानूंगा. और ये business छोटी छोटी चीज़ें सारा दिन तो ये पूछने बैठे हो कितना इनका टाइम लगता है क्यू ब्लॉक या वो ए ब्लॉक जाने में, सारा दिन तो वहां बैठे रहते हैं. तो बिजनेस क्या करे? हमने हिसाब लगाया है, स्लज जो है जिसको हम कहते हैं, जो परमिशंस का कॉस्ट है, आपकी परमिशंस का कॉस्ट हर सेक्टर में तकरीबन 50% है. आप अगर सारा दिन परमिशन लेते रहेंगे, एफिडेविट भरते रहेंगे, ये करते रहेंगे, और गवर्नमेंट अगर सारा दिन पॉलिसी चेंज कर, कैबिनेट मीटिंग होती है पॉलिसी चेंज हो गई, ईसीसी की मीटिंग होती है पॉलिसी चेंज हो गई, नया टैक्स आ गया, तो ये तो एनवायरनमेंट बड़ी अजीब है, इसमें कौन काम कर सकता है? So Ali, it comes back to policy framework. Policy is primarily driven by government, and government is what Dr. Nadeem describes to be what it is. So how will things change if you could reflect on more productive outputs for policy framework? How do you change this? So I think this is a very important point here. So first of all, I'd like to bring in an example from another economy, Malaysian economy, and talk about policy experience there. I've lived and worked in Malaysia for some years. So it is, in Malaysia, policy is not driven by the government, is not developed by the government. So policy happens and develops in a collaborative space in which the private sector, the civil society, the government, the politicians, ministers sit together and evolve a policy, and then they stick to the policy. I think when the policy direction is like, one way, top down, as I think it was mentioned here by Dr. Nadeem, then we obviously policy ki implementation bhi nahi ho sakti hai. So when we talk about policy implementation, I think the mistake which we make is just we're looking at an administrative point of view. We are not looking at the policy design. We are not looking at the policy process. And all such policies which have worked even in Asian economies in the last 20, 30 years have evolved out of a consultation model. हमारे कंसल्टेशन नहीं होती, टास्क फोर्स बहुत सारी बनती हैं. Every minister, prime minister would make task force, but those task force are not, they are not contributing in terms of research inputs. There is no backing of those research bodies, of those committees, and there's just a sort of a, it's like a media headline. So you talk to any member of any of the task force, they will tell you the same story. So the policy making process itself is deeply flawed. And we need to actually then revise the process so that then we can talk about the policy implementation. This last round, 5 minutes more, I want to bring in the people who live below the poverty line. Everybody is big on laissez-faire economy, free market economy, but you have like 48% of the people living below the poverty line. I recall a discussion that I had with Manmohan Singh in Delhi, early 90s, when India was opening up in the economy, and I asked him this regular journalistic question as to what about India's poor, and he came up with a brilliant answer. He said, I am not planning for India's poor, I am planning for India. And later on he suggested that for the next couple of years, and it turned out to be more than a decade, India's poor were not part of policy planning. So they said that we're going to get the country going, and then the economy will take care of the poor as well. So Rafe, if I could start with you. In the meanwhile, as we talk about opening up of the economy and sort of investing in the private sector, and private sector becoming the lead, it's also a rapacious, elite-captured economy. We know what private sector is capable of doing to the people. We have had a look at the sort of sugar industry का भी डॉक्टर साहब ने जिक्र किया, wheat का जिक्र किया,
real estate का जिक्र किया, health sector का जिक्र किया. Everywhere people suffer. So how do you move forward, and what do you do about the people who live below the poverty line? Go ahead. So I think, again, I think the government's job in all of this is to provide an enabling environment for the private sector to thrive. The government's job is to make sure that there are policy frameworks in place which encourage export orientation, which encourage competition, and competition is key, which encourage investment, which encourage innovation. अगर तो आपकी हुकूमत ये वाली पॉलिसी फ्रेमवर्क्स रख देती है, डाल देती है, ऑर्गेनिकली आपका प्राइवेट सेक्टर जो ग्रो करेगा, और जब आपका प्राइवेट सेक्टर ग्रो करेगा, आपका प्राइवेट सेक्टर इन्वेस्ट करेगा. जब आपका प्राइवेट सेक्टर इन्वेस्ट करेगा, आपका प्राइवेट सेक्टर जो है जॉब्स क्रिएट करेगा, और जब जॉब्स क्रिएट होंगी तो जॉब्स आपकी अक्रॉस द बोर्ड क्रिएट होती हैं जी. तो आई थिंक इफ़ द गवर्नमेंट डज इट्स जॉब ऑन द पॉलिसी फ्रंट, everything in many ways will fall into place. I'm not saying that we should not be supporting the poor. I think that we absolutely need to. There's a reason why we have programs like the Benazir Income Support Program in place. So I'm not saying that we shouldn't. Lekin in the grander scheme of things, especially in the context of the conversation that we're having today, I think that the government, as long as it provides the right enabling environment, things will eventually work out, especially in the long term. Jay. Raza Saab, the IT sector's ability to deal with the marginalized communities. Are you drawing HR from the rural areas, or is it sort of purely urban-centered, high-end skill set that you're drawing in? I mean, is IT even relevant to the poorer sections of society? It is very much relevant. खास तौर पे अगर Job creation क्या जी जी sure. What the examples I gave, in my last slot, and especially just to add to what Dr. Saab said about how you perceive IT in the upcoming days, it's very important. Second tier cities और third tier cities में जो intervention है, जो change है, or the kind of work these freelancers are doing, they are getting work online, and they are मोहल्ले के 4-5 बच्चों को भी वो साथ employ कर रहे हैं. There is a project called Digital Dera out in a village near Lodhna. उस गांव में उस लड़के ने फ्रीलांसर है, वी टुक हिम अलॉन्ग विद अस टू द स्कर्दू, एंड स्कर्दू में कुछ 400 बच्चों का उसने बूट कैंप कराया. एंड नियर बाई कॉलेजेस में तकरीबन सारों को छुट्टी थी 2 दिन के लिए. एवरीवन केम टू बल्तिस्तान यूनिवर्सिटी. दैट किड हैव ट्रेन्ड 50 किड्स आउट ऑफ हिज विलेज इन दैट डिजिटल डेरा. उसने मुझे फिगर्स दिखाई हैं कि 30 बच्चे 1 लाख रुपए से ज़्यादा कमा रहे हैं उस गाँव में रह के. ठीक, दिस इज़ द काइंड ऑफ चेंज वी आर टॉकिंग. बट वी हैव टू बी very aware of the facts which Dr. Saab highlighted. The one thing we are trying to preach is the cross skill, reskill is very important. अभी जो आपकी immediate need है, हमें पता है कि 40-50 हज़ार skill set किस तरह के चाहिए, but with upcoming tools, AI tools, upcoming new technological interventions, there is a danger, especially on the policy level, कि अगर आपने ये 50-60 हज़ार बच्चे, 1 लाख बच्चे 29-30 स्किल सेट जो हमने आइडेंटिफाई किए हुए हैं, उन्हीं पर अगर ट्रेन कर दिए, एंड इवेंचुअली इफ़ यू आर नॉट एबल टू रीस्किल दैम, इफ़ यू आर नॉट एबल टू हैव द राइट मैच ऑफ क्रॉस स्किल, एक और बर्डन होगा कि अब हमने बच्चे ट्रेन कर लिए हैं, अब वो जॉब्स खत्म हो गई हैं. सो वी आर ऑल्सो ट्राइंग टू स्टैब्लिश अ थिंक टैंक अगेंस्ट दिस थॉट प्रोसेस. इमीडिएट नीड तो हमारी जो ज़रूरत है, जो पोस्ट कोविड और कोविड के दौरान रही है. इंटरेस्टिंगली the Indian businessmen sitting in Dubai during the COVID, they routed the business to Lahore, Karachi and Islamabad. We had the fitting examples because we were able to somehow manage कि BPO और IT companies essential services हैं, ये बंद नहीं होंगी. और उस जो ग्रोथ थी हमें पिछले 2-3 साल को, वो वाला फैक्टर हमें नज़र आ रहा है. बट गोइंग अहेड वी हैव टू हैव अ लार्जर स्ट्रेटजी अराउंड दैट क्रॉस स्किल एंड रीस्किल थॉट प्रोसेस. Dr. Saab, what's your advice to the private sector, all of whose representatives are sitting here, 55 chambers, what to do given the fact that the government is what it is? What should they do in the meanwhile? I think we should all work together to reform the government. Joe Friedman ne kaha tha, he said a very important thing. The best thing that the government can do is put itself out of a job. The more the Prime Minister interferes or the cabinet interferes in the economy, the less progress we'll make. Their job is to make the rules and stick by the rules, not change policy every day. This business of Prime Minister and notice liya, this is the stupidest thing in the world I've ever heard. I've lived for 40 years in the US, the president has never taken notice of anything. The president cannot interfere in the economy. I think we have to be very clear what the rules are and where they should be. There are no rules in this country. The only rule is permission. That's why everybody runs to the Prime Minister and asks for permission. So we have to get out of that permission, and we have to make business sector, folks,
Where is your product? I've been to Sialkot, I've been to Gujarat, I've been to many places, I don't see a product. You don't have a product. Where is your R&D? You don't do R&D. When we ask to help you to do R&D, you don't. You don't do corporate strategy. You don't have businesses that are big. You have family-run businesses. Family-run businesses don't go anywhere in the world. You have to have professional businesses. Here, Talat Sahab, businesses break up rather than professionalize. I can point out, I won't take names, hundreds of businesses have broken up rather than make corporates and make professionalize the business. Mera beta kaam karega, meri beti kaam karegi, this business has to end. We have to have modern corporate businesses, not businesses that are run by the government and the state is just running them. Ali, So that, your advice to the private sector. so I think I'd like to answer your first question about Manmohan Singh and poverty, because private sector में तो बात हमने कर ली. अगर आज पूछेंगे आप मनमोहन सिंह से वही सवाल, तो वो आपको बताएंगे कि इंडिया का poverty rate is 5.5%. So actually he was right that sustained economic growth, which we have not experienced, sustained economic growth has helped significant reduction in poverty. It has happened across the board. Malaysia used to be 50% poor, now it's 0.5%. China, India. So you name a country and sustained economic growth ultimately lifts all the board and people become part of the process. So I think there is no other way other than the sustained economic growth, in which of course private sector has to be part of the process. And I would believe that even Pakistan's own experience in last 20 years, हमारे poverty rates भी काफ़ी oscillate होते रहे. So you can see when the growth rate was high for a few years, actually it improved the, it reduced the poverty lines rate. So I think that is the only way forward. And I don't have other sort of recipe right now. इसमें मैं छोटी सी बात कह दूं, आई थिंक पॉवर्टी पे वी मेक टू मच ऑफ द पॉवर्टी. वो मेरा एक दोस्त है इंडियन, सुरजीत भल्ला, वो हमेशा कहता है ऑल द सिंस इन द वर्ल्ड हैव बीन कमिटेड इन द नेम ऑफ पॉवर्टी. पॉवर्टी इस मुल्क में रिड्यूस हो गई है. ये हम मेजर चेंज करते रहते. पॉवर्टी इज नाउ डाउन टू 10-12%. अगर पुराने मेजर से देखें बल्कि 8% के करीब है. अगर आप बढ़ा दें मेजर्स तो और बात है. एक और चीज़ है, पॉवर्टी का हुकूमत ने कभी कुछ नहीं किया, बल्कि पॉवर्टी का बेड़ा कर किया. फॉर एग्जांपल हमने खोखे लगवाए थे इस्लामाबाद में, हुकूमत ने तोड़ दिए. ठीक है, जो भी जज साहब आए, जज साहब ने बिल्डिंग गिरा दी, जज साहब ने खोखे गिरा दिए, तो पॉवर्टी का कुछ नहीं होता. सड़कें जब हम चौड़ी करते हैं हम गरीबों को मारते हैं. सड़कें जब फ्लाईओवर बनाते हैं गरीबों को मारते हैं. The only thing that has helped poverty, Talat Sahab, in this country, studies have shown, is what? Is remittances. जब वो भाग के जाता है दुबई, जब वो स्मगल होके जाता है यूरोप में, वो रेमिटेंस भेजता है, वो उसको कर रही है. रेमिटेंस हेल्प्ड एवरीवन इन द कंट्री. हम कहते हैं यहाँ रेमिटेंस क्या है? रेमिटेंस यहाँ शहर बन रहा है, कॉमर्स आ रही है. हम कहते हैं यहाँ शहर बनने दो, शहर नहीं बनने देते बाबू. हम कहते हैं यहाँ कॉमर्स करो, कॉमर्स नहीं करने देते बाबू. तो पॉवर्टी तो गवर्नमेंट कॉज करती है और कोई नहीं कॉज करता. Thank you very much on this well-meaning cynicism of Dr. Nadeem. I have to close the session. A big round of applause for all the panelists who spoke their heart out and told us things that you normally don't get to hear. And thank you very much for your patience. I'm sorry I couldn't take the questions from the floor, but we had agreed that if there are any questions, they will be parked for the last session. Thank you very much for your patient hearing. And with this, we close the session. Thank you.